Welcome dear students, hopefully you all are doing well. So today we will start paragraph number 3. As you know that we have done with paragraph number 1st and 2nd, so today we will start paragraph number 3. So look at paragraph number 3. I put my bag on the desk. मैंने अपना बस्ता जो है, अपना बैग जो है वो डेस्क पर रख दिया. Then I went to read the notice board. और फिर मैं नोटिस बोर्ड पढ़ने चली गई. The notice board is usually written by our senior classmates. नोटिस बोर्ड जो है ये हमारे जो हमसे बड़े क्लास वाले हैं उन लोगों ने लिखा होता है. Usually, अक्सर. Written is the third form of write. Classmates, हमजुमात. It is hung in the veranda near the playground. ये कहाँ पर लटका होता है? बरामदे में. वरांडा जो है बरामदे को कहते हैं. प्लेग्राउंड के नज़दीक, खेल के मैदान के नज़दीक बरामदे में लटका होता है. I like to read the notice board because there is always something interesting written on it. मैं जो है नोटिस बोर्ड पढ़ना पसंद करती हूँ क्योंकि यहाँ पे हमेशा कुछ न कुछ दिलचस्प लिखा होता है. इंटरेस्टिंग, दिलचस्प. समथिंग, कुछ. ऑलवेज, हमेशा. Today a saying of our Rasulullah sallam was written on the board. आज हमारे प्यारे नबी सल्लम का फरमान लिखा गया था नोटिस बोर्ड पर. इट्स सैड, अल्लाह लव्स दोज हु वर्क विद देयर हैंड्स. अल्लाह उनकी मदद करते हैं जो अपना काम खुद करते हैं, अपना काम अपने हाथों से करते हैं. नाउ हियर आर सम ऑफ द मीनिंग्स एंड दिस पैराग्राफ. सो लुक एट दिस वर्ड्स मीनिंग. क्लासमेट्स, fellow students. हमजुमात, hung is the past form of hang. hung, attach, लटकाना. interesting, captivating, दिलचस्प. Now what is the SLO's question and this? Who taught Salma the Holy Quran? Great Ma taught her the Holy Quran. Taught is the past form of teach, as I have told you. What question number 3? What was written on the notice board? So the answer, Allah loves those who work with their hands. So this was all about paragraph number 3. You people will write these words meaning and these SLO's questions in your registers. Okay, take care. Allah Hafiz.